everyone, welcome or welcome back to my channel, that is AMS MBBS Lectures. In today's session, we're going to continue the same topic under general parasitology, that is laboratory diagnosis, guys. Again, now in the previous part of laboratory diagnosis, I have covered up something called as the examination of feces. Stool examination kiya tha. All these topics are completely covered in the previous video. You can go and watch it if you haven't. And in that video, I've also covered a very important topic from practical point of view, that is your saline and iodine mount preparation, guys. Again, right now we have to cover up the remaining topics, okay, that is blood examination, some other specimen examination, immunodiagnostic methods, molecular methods, and most important, some other diagnostic modalities as well. Okay, let's get started with the first one, that is the examination of blood. Now blood examination हम लोग किसके लिए करते हैं? Why are you doing the examination of blood? To definitely detect parasites, but specifically blood parasites. Okay, and the examples of blood parasites comes out to be malaria है, Babesia है, then we have your Trypanosoma, Wuchereria bancrofti, Brugia melli, Loa and Manzanella, guys. ठीक है, classification कभी देखा है parasites का, तो remembering this thing would be an easy task, right? Then comes into picture, that is comes the methods of examination. Now a blood examination के चार चीजें हैं, okay, that is we can do a direct wet mount examination can be done, or we can go with a blood smear examination. We can prepare the smear and examine it under the microscope, quantitative Buffy coat examination, and some concentration techniques to be studied. Okay, so now let's have a look with the direct wet mount preparation, guys. Now this direct wet mount preparation is mostly useful for the detection of what? For the detection of malarial parasites. Okay, malarial parasites can be detected, guys. Then malarial parasite ke alawa, you can also detect something called as your microfilariae. Microfilariae means which disorder I'm talking about? Definitely microfilariae in case of lymphatic filariasis. Okay. Now, the second half, that was all about direct wet mount examination. Then comes something called as your blood smear examination. Blood smear, we know thin smears and thick smears comes into picture. There are two types of smear, that is thin smear and thick smear. This is how they look. Okay, you have to prepare these smears. After preparing the smears, we have to stain the smears. Okay, so we have to stain the smears. Which group of stains we are using? We are using Romanowsky stains. Okay, Romanowsky stains, examples of these things you can remember as your Leishman stain. Okay, we have the Leishman stain, we have the Jimsa stain. Okay, we have the Jaswant Singh and Bhattachar stain, that is the JSB stain. And okay, this was all about the examples. So ये कोई भी stains use कर सकते हैं यहाँ पे to stain the slide and then examine it on the microscope. This is one of the most common method and one of the most useful methods, guys, of detecting all your blood parasites, है ना. तो सारे blood parasites के detection के लिए ये एक अच्छा एक method होता है, that is just prepare the smear and examine it after staining. ठीक है. Then next is something called as quantitative Buffy coat examination. How can we do this technique? It's very simple, guys. ठीक है, इसके लिए हम लोग को लगती है capillary tube, which is shown over here. This is the capillary tube that is required. This capillary tube में हम लोग को blood लेना है. ठीक है, to collect something that is called as the blood. अब जब blood collect कर रहे हो तो ये capillary tube के अंदर एक stain already present होना चाहिए. Should be coated internally with a stain. Okay, and that is acridine orange stain. So you have to take a capillary tube लेनी है, capillary tube which should be internally coated with a stain that is called acridine orange stain. Collect blood inside that thing. Then okay, now once we are done with the blood collection, the second thing, we are going to put it inside this machine. What is this? This is a centrifuge. We are going to do centrifugation. The next step is centrifuge the thing. After centrifugation, this capillary tube after centrifugation gets divided into three parts. Okay, the bottommost segment is going to have erythrocytes. At the top we have the plasma, and in between we have a very thin layer that is called the Buffy coat. Okay, so we get after centrifugation we have to do the Buffy coat, and this is the area that we have to examine under fluorescence microscopy, guys. ठीक है, तो fluorescence microscopy के through की, ठीक है. And this technique is mostly used for the detection of microfilaria हो गया, malarial parasites हो गए, उनके detection के लिए भी use this technique, guys. ठीक है. Done with this part, then comes into picture that is called the last thing, that is called concentration of the blood. ये जो technique होती है, this is useful for something called as the detection of microfilarias. Okay, microfilaria के detection के लिए we use this technique, and the various methods over here is your sedimentation technique, cytocentrifugation also called as cytospin, knot concentration method, gradient centrifugation, and membrane filtration. ठीक है. So that was all about the examination of the blood, guys. ठीक है.
So we are done with the examination of blood. Now let's have a look on the microscopic examination of some other specimens. So it's a very huge table. You can have a look. जैसे कि अगर blood smear की बात कर रहे हो तो blood smear you can use it for the detection of these species like Plasmodium, Leishmania, Trypanosoma, filarial nematodes, है ना? These all things can be detected using a blood smear. Similarly, bone marrow या liver का sample या lymph node or a splenic aspirate if you are taking, so you can detect species like Toxoplasma, Leishmania donovani. Right, this is thing. CSF की बात करो तो CSF means Naegleria fowleri and Acanthamoeba species, Trypanosoma species, ठीक है? These things can be detected. Right, similarly we have urine, उसमें Trichomonas can be, Trichomonas vaginalis. We know Trichomonas vaginalis is a, usually it results into urinary tract infections, या ना, genital tract को affect करता है कहीं ना कहीं वो, it basically affects the genital tract. Similarly, the Wuchereria bancrofti, Schistosoma mancini, Schistosoma hematobium over here. So that was all over. So ये table you can go through these things. That is for your other thing. So done with the blood examination, done with the microscope examination of other specimens. Now we have to look at the immunodiagnostic methods, guys. Okay. अब immunodiagnostic methods की बात करें तो as already mentioned in the previous slide, they are used for the detection of your antibodies and antigens. Yes or no? तो parasite specific antibodies in the serum and the circulating parasitic antigens को detect करने के लिए ये test होते हैं. Now, before going into the details of antibody test and some antigen detection test, why, okay, when we are doing this test, okay, when we are performing these immunodiagnostic methods, so these are useful. जब भी हम लोगों के जो parasites होते हैं, okay, it's ऐसी कोई condition, ऐसा कोई infection है जहाँ पे सिर्फ early stages के अंदर disease है, या तो जो parasites है they are occurring very small numbers, ठीक है, और the parasite is residing inside the internal organs, that means morphological identification is not possible. Or per se the techniques like दूसरे diagnostic techniques like culture and all, they are very time consuming, they are taking a lot of time, guys, ठीक है. So all under all these circumstances we can opt for these immunodiagnostic methods, guys. Okay, let's discuss each one of them in detail. तो antibody detection test, ओके देखो एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट की बात करो, एंटीजन डिटेक्शन, दोनों हम लोग टेबल के फॉर्म में कवर अप करेंगे. तो एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लुक एट द नेम ऑफ द डिजीज, विच टेस्ट वी आर गोइंग टू परफॉर्म, एंड लास्टली कौन सी एंटीबॉडीज हम लोग डिटेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है. तो ये देखो गाइस, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट. एंटीबॉडी डिटेक्शन में फर्स्ट जैसे कि वी हैव द अमीबिक लिवर डिजीज, है ना, अमीबिक लिवर एब्सेस है, तो अमीबिक लिवर एब्सेस में वी आर गोइंग टू यूज एन एलाइसा, ओके, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे वी आर गोइंग टू परफॉर्म. एंड ये टेस्ट करोगे तो कौन से एंटीबॉडीज इट विल डिटेक्ट अगेंस्ट विच एंटीजन, दैट इज 170 किलो डाल्टन ऑफ लेक्टिन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करके निकालेगा ये. Similarly, if I say there is something called as visceral leishmaniasis, यहाँ पे we are going to perform an immunochromatographic test. Okay, what is this immunochromatographic test, guys? ऐसे strip जैसे test होते हैं. Okay, these are a strip जैसा test होता है ना. Starting में here is the sample area. Okay, we have to put the sample and then we have the test line, we have the control line over here, है ना. टेस्ट लाइन एंड कंट्रोल लाइन होती है, तो वहां से पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट हम लोग को मिल जाते हैं. So for visceral leishmaniasis, there is an ICT available, guys, and it is going to detect the antibody against which antigen, RK39 antigen के against antibody detect करता है. Similarly, we have toxoplasmosis का example. For toxoplasmosis, there are two methods, guys. Okay, that is called the Sabin-Feldman dye test and the ELISA. Now, ये जो Sabin-Feldman test है, this is a complement-mediated neutralization test, and it is going to detect the antibodies, whereas ELISA is going to detect antibodies like IgM, IgA, IgG type of antibodies को detect करेगा. ठीक है. Then we have something called as cysticercosis. Cysticercosis में again we have two methods available over here. Either we can go with ELISA or we can perform a Western blot. ELISA जब करोगे तो it is going to detect the purified glycoprotein antigen को detect करता है ELISA in case of cysticercosis. Whereas if you're going with a Western blot, cysticercosis में if you are performing a Western blot, it is going to detect the antibodies against the highly specific 50 to 13 kilo Dalton lentil lectin purified 7 glycoprotein abbreviated as LLGP antigenic fraction के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डिटेक्ट करेगा. तो ये स्पेसिफिक है एलाइसा के लिए purified glycoprotein, whereas for Western blot it is the LLGP antigenic fraction के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डिटेक्ट करेगा. Then next example we have Hydatid disease. In case of Hydatid disease, we can go with ELISA. Okay, that is going to detect your antibodies against B2T or 2B2T antigen के against ELISA will detect the antibodies. Or there is a very specific thing for your Hydatid that is called DIGFA, that is dot immunogold
fraction, okay, sorry, dot immunogold filtration assay can be performed over here. Then we have your lymphatic filariasis. In case of lymphatic filariasis, में we can go with flow through assay. Flow through assay करोगे तो it is going to detect your recombinant filarial antigen के against antibodies, and that is WBSXP1. And Brugia rapid test कभी apply करोगे तो it is going to detect antibodies against the recombinant Brugia Malay antigen, that is BM14 antigen के against antibodies को detect करेगा. I hope this table is clear till here to every one of us. Right? Now, similarly, we have a table for the antigen detection test. Okay, antigen detection के लिए भी same होता है. ठीक है, name of the disease, okay, the test that are going to apply and which antigen आप लोगों को detect करके मिलने वाला है वो है. ठीक है, the first thing we have amoebiasis over here. For amoebiasis, guys, we are going to apply ELISA, and ELISA अगर अप्लाई करो तो कौन सा एंटीजन डिटेक्ट होकर आने वाला है? 170 किलो डाल्टन ऑफ लेक्टिन एंटीजन गेट्स डिटेक्टेड. एंड डेफिनेटली अमीबियासिस के लिए कौन सा सैंपल लोगे? आइदर अ ब्लड सैंपल और स्टूल सैंपल अगर लोगे तो ये चीज आप कर सकते हो. ठीक है. Similarly, we have something called as triage parasite panel. What is this triage parasite panel? This is not a name of the disease. Take it, it's not a disease, guys. It is just the name of the test, which is an immunochromatographic test. Okay, and it is going to simultaneously detect 3 antigen. From the name, it's clear. Triage. Triage indicates 3. So it is going to detect 3 antigens, and that is the antigen of Giardia, that is alpha 1 Giardin antigen. For E. histolytica or Entamoeba dispar, that is 29 kilodalton antigen, and we have the Cryptosporidium isomerase antigen over here. And again, this thing is detected in stool samples. आप ले सकते हो for this case. Now, in case of malaria, also we have an immunochromatographic test. Okay, and the 2 antigens that is present is your histidine-rich protein 2, and we have that is PFHRP2 and the parasite lactate dehydrogenase aldolase. One thing that you have to remember over here is this histidine rich protein 2, इसको abbreviate किया गया है PFHRP2. What is this PS standing for? Plasmodium falciparum. It is very much specific. ये जो antigen होता है हम लोग का HRP antigen, this is specific for Plasmodium falciparum. ठीक है, आपकी प्लाज्मोडियम की और भी स्पीशीज होती है ना, वाइवैक्स है, मलेरिया है, ओवेल है, एंड वी हैव फैल्सीपेरम. तो ओनली फैल्सीपेरम इज द वन व्हिच इज हैविंग दिस HRP2 एंटीजन, गाइस. ठीक है, रेस्ट अदर स्पीशीज के अंदर वी हैव योर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हो सकता है, या एल्डोलेज इज समथिंग दैट इज कॉमन टू ऑल द प्लाज्मोडियम स्पीशीज. ठीक है, यस, वाइवैक्स बोलो, मलेरिया, ओवेल और समथिंग कॉल्ड एज falciparum, ये सारे स्पीशीज के अंदर आप लोग को आइदर द LDH वुड बी प्रेजेंट और द aldolase वुड बी प्रेजेंट, गाइस. ओनली HRP2 इज समथिंग दैट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर falciparum. ठीक है, ये चीज यहाँ पे याद रखना है. अगेन इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट वही होता है, गाइस, ऐसा एक स्ट्रिप होगा. ठीक है, वी हैव अ सैंपल एरिया ओवर हियर एंड वी हैव द टेस्ट लाइन 1, टेस्ट लाइन 2 एंड अ कंट्रोल लाइन ओवर हियर. जो फर्स्ट टेस्ट लाइन होती है दैट इज फॉर योर HRP2 एंटीजन के लिए होगी. सेकेंड वाली जो लाइन होगी आइदर इट कैन बी फॉर LDH और द aldolase, एंड थर्ड लाइन ऑफ कोर्स इट वुड बी अ कंट्रोल लाइन. ठीक है, तो पहले 2 टेस्ट लाइंस एंड कंट्रोल लाइंस हैं. यू हैव टू पुट द सैंपल एंड डिपेंडिंग कहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है यू कैन कम टू अ कंक्लूजन. ठीक है, then we have some similar example for lymphatic filariasis. Okay, either we can go with an ELISA or you can perform an ICT and it will detect the filarial antigens over here. अब ये सारे टेस्ट में एंटीजन को डिटेक्ट करना है, तो फॉर दैट वी आर यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है अगेंस्ट विच एंटीजन? अगेंस्ट OG4C3 एंड AD12 एंटीजन के अगेंस्ट, एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज की जाती है फॉर डिटेक्शन ऑफ द फाइलेरियल एंटीजन बाय आइदर ELISA और इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट ओवर हियर. ठीक है, अब जो यहाँ पर ये दिखाया गया इज दैट इज ट्राइएज पैरासाइट पैनल. ठीक है, लेट मी शो यू द इमेज रिगार्डिंग दिस ट्राइएज पैरासाइट पैनल ओवर हियर. So here we have the image of triage parasite panel over here, guys, that is showing this thing. So you can see this is the image showing triage parasite panel, जहाँ पे we can see the Giardia, E. histolytica and we have the Cryptosporidium. So this is like the control वाला area है, ठीक है, and this is like something called as the test zone over here.
तो ये 3 एंटीजन्स को एक साथ डिटेक्ट करता है। एंड दिस इज जस्ट अ इमेज शोइंग ओवर हियर दिस साइड पे, दैट इज हाउ आईसीटी लुक्स गाइस। ठीक है, एक सैंपल पैड होता है, कॉन्जुगेशन एरिया होता है, वी हैव अ टेस्ट लाइन, वी हैव अ कंट्रोल लाइन ओवर हियर, है ना। इसकी जो डिटेल्स होती है गाइस, एवरीथिंग, ये जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर एलाइसा के बारे में बात कर रहे हैं या आईसीटी एंड ऑल दिस, इनके सारे जो प्रिंसिपल्स है, हाउ दे वर्क, वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल व्हेन इट कम्स टू इम्यूनोलॉजी, नॉट राइट नाउ। अभी फॉर द टाइमिंग जस्ट यहाँ पे नाम नाम याद रखो, दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, so with that we are done with something that is called as the blood examination हो गया, other species का examination हो गया, and ये तो already first part में cover up हो गया था, and now we have the immunodiagnostic methods also done. Now let's have a look on these molecular methods. A very short topic as molecular method मतलब PCR की बारे में बात करनी है. Now this PCR and real time PCR, polymerase chain reaction and the real time polymerase chain reaction, these are developed for most of the parasitic infections के लिए ये PCR develop हो चुका है. तो most of the parasitic infections के लिए it is developed. Okay. Similarly, if I talk about something that is called as LAMP assay is developed for the detection of VL, that is visceral leishmaniasis. Okay, visceral leishmaniasis के लिए present है, and it is also present for something called as the malaria. LAMP assay guys, ठीक है. And biofire film array on the other hand, this is a automated multiplex nested PCR. ठीक है, एंड इसी बायोफायर फिल्म एरे में ना गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पैनल होता है गाइस. Okay, it is also having a gastrointestinal panel associated with it, which can detect simultaneously near 22 enteric pathogens को detect कर सकता है, including 4 parasites like E. histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium and Cyclospora. तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जियार्डिया लाम्बलिया, क्रिप्टोस्पोरिडियम एंड साइक्लोस्पोरा को भी डिटेक्ट करेगा. Enteric pathogens are nearly 22 enteric pathogens with 4 parasites like these by your biofire film array gastrointestinal panel. Clear? Then this was all about the molecular methods as well. So we are done with the molecular methods as well. Last cheese regi, that is other diagnostic modalities. Okay, let's get started with the culture techniques. Now there are culture techniques and parasitology. No, we don't do this thing on a very routine basis पे diagnosis के लिए we don't do this thing guys. ठीक है, ये culture technique कभी करना भी है तो it is mainly useful for research as or teaching purposes के लिए useful होता है. तो culture is not a very important part when it comes to parasitology ka lab diagnosis. Now there are certain imaging techniques. When I say imaging techniques, we have X-ray, we have ultrasounds, we have computed tomography, and we also have your magnetic resonance imaging over here. ये सारे techniques कैसे होते हैं? These are non-invasive methods, है ना, non-invasive होते हैं, and ये technique क्यों use करते हैं हम लोग? They are extensively used for, please pay attention, space occupying parasitic infections. Okay, space occupying parasitic infections के लिए use होती है. And examples of these space occupying parasitic infections is amoebic liver abscess. Okay, we have your amoebic liver abscess, we have cysticercosis, and we have the hydatid disease. तो ये 3 examples है यहाँ पर. ठीक है, done with 2 other methods, that is culture and imaging techniques. Now let's move ahead towards the next part, that is xenodiagnostic method. This is something a bit unique to study guys. ठीक है, अब इस टेक्निक में क्या होता है, we have to take the arthropod vectors. ठीक है, आर्थ्रोपोड वेक्टर्स लेते हैं. प्लीज पे अटेंशन, दैट इज दीज आर नॉट समथिंग हम बाहर जाकर के ऐसे आर्थ्रोपोड वेक्टर्स को कलेक्ट करके नहीं लेके आते. दीज आर लैबोरेटरी प्रिपेयर्ड, दीज आर लैबोरेटरी प्रोड्यूस्ड वेक्टर्स गाइस, एंड दीज वेक्टर्स ओके विच आर फ्री फ्रॉम द पैरासाइट. ओके, दे आर फेड ऑन द इन्फेक्टेड पेशेंट्स. अब पेशेंट जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन के साथ इन्फेक्टेड है उसके ऊपर इन पैरासाइट्स को, इन वेक्टर्स को, दे आर फेड ऑन दीज पेशेंट्स. देखिए, दे आर फेड ऑन दीज पेशेंट्स, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ नियरली 2 to 4 weeks के बाद वी आर गोइंग टू examine these vectors for the presence of the parasite, and this is what is referred to as the xenodiagnostic टेक्निक. थोड़ा यूनिक है ना, बट याद रखना इस चीज को. एंड ये जो टेक्निक होती है, दिस इज नॉट वेरी कॉमनली यूज, इट्स अ वेरी रेयर टेक्निक दैट वी यूज, ना, सेल्डम वी यूज दिस थिंग, नॉट सो ऑफन फॉर द डिटेक्शन और डायग्नोसिस ऑफ चगास डिजीज के लिए यूज किया जाता है ये. ठीक है, नाउ दिस चगास डिजीज इज आल्सो कॉल्ड एज द अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस कॉज्ड बाय द पैरासाइट ट्राइपैनोसोमा क्रूजी, एंड इसका जो वेक्टर होता है गाइस, दैट इज triatomine bugs. And then we have something that is called as your animal inoculation methods. So that was xenodiagnostic methods. Now we have the next one that is called animal inoculation methods. इसमें क्या होता है, ये भी जो टेक्निक होती है गाइस, दिस इज अगेन नॉट समथिंग दैट वी डू ऑन अ रूटीन बेसिस, है ना, डायग्नोस्टिक पैरासाइटोलॉजी में.
दिस इज समथिंग वेरी यूजफुल इन रिसर्च पर्पसेस के लिए यूजफुल होता है, नॉट फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस, रिसर्च पर्पसेस के लिए दिस इज हेल्पफुल. इस टेक्निक में जो फॉर एवरी एनिमल, ओके, फॉर एवरी डिफरेंट पैरासाइट देयर इज अ स्पेसिफिक एनिमल मॉडल प्रेजेंट गाइस. लेट मी हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स ओवर हियर फॉर यू. तो जैसे कि हमारे पास है टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड ट्राइपैनोसोमा. फॉर दिस द एनिमल मॉडल वुड बी माइस. Okay, for a leishmania we have something that is called as a hamster over here. Okay, we have hamster. And toxoplasma and trypanosoma trichinella के लिए you can use rats, okay, as animal model. Okay, so that was animal inoculation method. At the end we have your intradermal skin test. अभी जो स्किन टेस्ट होते हैं गाइज, दीज आर लाइक कुछ पैरासाइटिक इन्फेक्शन स्किन टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं. ये मेनली यूज होते हैं टू ओके लुक फॉर योर पास्ट एक्सपोजर. क्या देयर वाज अ पास्ट एक्सपोजर प्रेजेंट था या नहीं, उसके ही सजेस्टिव इंडिकेट करता है ये वाले टेस्ट. ओके, नाउ दीज टेस्ट जो होते हैं गाइज, वंस दे आर पॉजिटिव दे विल स्टे पॉजिटिव फॉर अ वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन एंड देयरफॉर कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दी ओल्ड एंड रिसेंट इन्फेक्शन के ऊपर नहीं होता. अभी जितने भी टेस्ट होते हैं दे आर ऑल बेस्ड ऑन hypersensitivity reactions, okay, on different types of hypersensitivity reaction पे based होते हैं ये वाले. जैसे कि we have your immediate hypersensitivity, we have delayed type of hypersensitivity. Now immediate hypersensitivity की बात करूँ तो we have tests available for hydrated disease like Cassini's test. For filariasis we have, for schistosomiasis, ascariasis, strongyloidiasis and trichinosis के लिए we have the Bachmann's test available over here. Similarly, for your delayed type of hypersensitivity, the test is available for leishmaniasis, that is called the Montenegro's test. Okay, trypanosomiasis के लिए होता है, and toxoplasmosis के लिए भी एक टेस्ट अवेलेबल होता है. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द अदर डायग्नोस्टिक मोडालिटीज. ओके, सो इसी के साथ सारे लैब डायग्नोसिस, पूरा जो सारा एस्पेक्ट्स है लैबोरेटरी डायग्नोसिस के विद रिस्पेक्ट टू पैरासाइट्स इज कम्प्लीटली डन गाइस. एंड yes, so that is it for this session. If you found this content useful, then do like, share and subscribe to my channel guys. Thank you so much for watching. If you have any questions or queries guys, do comment down. I will answer to it, and keep studying. See you all in the next one. Bye bye.